respected teachers, and today's attraction, dear 12th standard students and my dear 11th standard students who are giving send-off. We have written here farewell, and Ringi and Angita, when they were reading out their farewell speech, they rightly pointed out it is not an end, we are getting out for a beginning. You have rightly understood that you are going to fare well from what you have learnt the last 12 years as students of this school or various schools. We congratulate for having accomplished continuously 12 years of studies. Now we are in a digital world of learning. The world is moving fast. Yesterday we had the annual program. हमारे बच्चे लोग, parents, teachers, young, other society people, what they face, they presented. They were telling we are living in a world where there is mobile, where there is internet, where there is TI and various other technologies. This is a good thing. But when we have studied wonders of science, जब हम लोग wonders of science सीखे थे, लॉन्गमैन के द्वारा कहा गया एक वाक्य था, man has learned to walk on the moon. मानव चंद्रमा में चलना सीखा है, but he has not learned to walk on the earth. लेकिन वो धरती में आज तक कैसे चलना है वो नहीं सीखा है. So technology will grow faster. When you become father, mother or grandparents, the world will be different. दुनिया completely अलग होगा. लेकिन आप लोग अपने जीवन में हमेशा बहुत सारा रास्ता है. मैं आप लोगों के समक्ष दो रास्ता बताना चाहता हूँ. I want to place before you two ways. Live to by our great leaders. One is Mahatma Gandhi. एक है महात्मा गांधी, दूसरा B.R. डॉक्टर अम्बेडकर. महात्मा गांधी ने अपने जीवन में क्या किया? महात्मा गांधी लोगों के हर भारतवासी के अंदर, in every citizen of India, there was a thirst, एक प्यास स्वतंत्रता पाने के लिए, to get freedom, to get liberated from the British people. So Gandhi ji, that wind flew in which direction? जो दिशा में हवा है ना चल रहा था, उसी दिशा में लोगों को एकत्र किया, अगुवाई किया, and he was a leader to lead the mind of the people, to fulfill the thirst of the people, लोगों के प्यास को बुझाने के लिए, है ना, like 11 players playing football, 10 खिलाड़ी मदद करते हैं, एक फॉरवर्ड खिलाड़ी उसको गोल मार देता है बार बार. वही है गांधी जी.
इसमें आप लोग चल सकते हैं हवा के साथ, पानी के फ्लो के साथ और लोगों के दुनिया के विचार के साथ चलना बहुत आसान है। आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे। ये एक प्रकार का जीवन है। दूसरा है B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर का विचार अलग है। वो हवा जिस दिशा में चल रहा है, पानी जिस दिशा में है ना बहते जा रही है, उसके विपरीत चलना और उसके विपरीत तैरना उनके लिए बहुत आसान नहीं था। क्योंकि एक तरफ हमारे देश में स्वतंत्रता का एक प्यास था, उस प्यास बुझाने के लिए करोड़ों लोग खड़े थे, लेकिन उस करोड़ों लोगों के बीच में करोड़ों लोगों के अंदर भेदभाव था। असली स्वतंत्रता नहीं था, सामाजिक स्वतंत्रता। ये सामाजिक स्वतंत्रता को पैदा करने के लिए अंबेडकर को लड़ना पड़ा। कैसे लड़ा? शिक्षा के द्वारा। यू ऑल नो अंबेडकर के पास कितना डिग्री थे? हाउ मेनी डिग्रीज ही हैड? 35, 36। ओके, सो ये इतना डिग्री क्यों प्राप्त करने के लिए क्यों प्रयास किया? समाज में परिवर्तन लाने के लिए। स्वतंत्रता की लड़ाई हम अंग्रेजी से लड़ रहे थे, वो विदेशी लोग थे। हमको उन लोग दो चीज करने के लिए आए, गुलामी करने के लिए, हमारे धन दौलत को अपने पास लेके जाने के लिए आए थे। बाकी कोई मतलब नहीं था उनसे। लेकिन समाज में एक चीज था, हमारे लोग जो हमारे देश में ही पैदा हुए, उनको गुलामी में रखना है, उनको अपने पैरों के नीचे रखना है। उनको आज जैसे आप लोग बैठे हैं, आज मेरे साथ आप लोग है ना स्कूल मॉनिटर्स, क्लास मॉनिटर्स एक साथ बैठे थे। ये असंभव था। ये असंभव था 1947 के पहले। वहां पर हवा के साथ ना चलकर, पानी के बहाव के साथ ना चलकर, एक व्यक्ति करंट के विरोध ऊपर उठना और अपने आप को स्थापित करना दूसरा रास्ता है। आप कौन सा रास्ता अपनाना है, आप निर्णय कीजिए। आप वहां पर आज आप लोग स्कूल का जीवन लास्ट डे परिचय लिखेंगे, उसके बाद बाय बाय। ये जीवन कभी वापस नहीं आएंगे। It will never come back. And therefore आपका निर्णय लेना है, where I have to be। भीड़ के साथ चलना आसान है, भीड़ से हट के चलना, get out of the crowd and walk, there you will make the difference। वहां पर आप लोग अपने जीवन में ऐसे अपने आप एक पहचान बनाएंगे। वो आपको जहां लेके जाना है, आपका सपना, where you have the dream to utilize or materialize, you will get। And therefore decide where you have to go। And third, my dear children, रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम के एक व्यक्ति कहता है, we have miles to go before I sleep। हम लोग के सामने 8 मील्स यात्रा करना है, 8 मील्स यात्रा करना है हम सोने के पहले। हम शारीरिक रूप से हम लोग रोज प्रतिदिन सोते हैं, उस नींद के बारे में नहीं बता रहा है। हम अंतिम दिन हमको लोग जब शमशान घाट लेके जाएंगे, उसी दिन तक हमको बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए हमें दुनिया अवसर प्रदान करता है। उस अवसर को
जितना आप और मैं उसका लाभ उठा पाएंगे, उसी से हम लोग क्या करेंगे, लाभ पाएंगे। हम लोग सब अभी थोड़े से अलग आने के लिए बहुत सारा तरीका अपनाए। मेरे से भी कुछ परमिशन पूछे, कुछ चीज़ों के लिए मैं परमिशन दिया, कुछ चीज़ों को रोका। बच्चे, एक छोटा उदाहरण है, हमारे पास वो बबलू है, बबलू जानते हैं ना, सब लोग जानते हैं। 1 साल के पहले उसकी कहानी को बता रहा हूँ। 1 साल के पहले मैं बुधवार और शनिवार के दिन सिस्टर लोगों के लिए सब प्रार्थना कराने के लिए जाऊंगा। मेरे साथ चलेगा, वो गेट बंद रहेंगे, वो क्या करेगा मालूम, छलांग मार के, इतना बड़ा गहरा के छलांग मारेगा, गिरेगा, मैं गेट खोल के वहाँ आगे निकलने तक मेरे सामने आकर खुद के आगे आकर वो बताएगा, मैं आपसे पहले कूदा हूँ, आपके पहले मैं आ गया हूँ। अभी 1 साल बीत गया, अभी वो मेरे साथ आएगा वहां तक, लेकिन चला नहीं पार पाएगा, और मेरे गेट खोलने तक इंतजार करेंगे। जैसे मैं गेट खोल के मैं बाहर निकलेगा, वो मुट्ठी डाल के अंदर बाहर निकलने के लिए कोशिश करेगा, to try to come out. I will lock. What it will do, उस दरवाजों को स्क्रैच करेंगे, आवाज करेंगे, क्योंकि it knows अभी मैं पहले जैसे क्या नहीं कर सकता हूँ, चला मार नहीं सकता हूँ। इस उम्र में आपका खून गर्म है। आप लोग अभी सोच रहे, हम लोग प्लेइंग विथ योर फीलिंग, भावना के साथ खेल रहे हैं। दैट भावना, दैट फीलिंग makes you to do something in the society, but not always right. Something right, something wrong. इसलिए now is the time to control that feeling, and you have a big dream, miles to go before we sleep. That means before we go to Samsanda. We have 1,000 things to do, and therefore, dear children, control your feeling and get out from here, and you will reach your dream, your lakshya, your goal. Therefore, I wish, control everything now and channelize. Just like I told, बयाकान में बिजली निकालते हैं, वहाँ पर फोर्स से पानी को नीचे गिराते हैं। पानी से बिजली नहीं बनता है, पानी के फोर्स से बिजली बनता है। समझ में आ रहा है ना? वो फोर्स का चैनलाइज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन होता है। ये हाउ द फोर्स, उसको चैनलाइज करो, देन फ्रॉम यू बिजली आएगा, इलेक्ट्रिसिटी विल कम। नेक्स्ट, डियर चिल्ड्रन, you may be interested to know about your group. Yes or no? Yes. I am telling 2 positive things and 2 things to improve. जो हमको है ना, when you get out, है ना, you all are, I am telling you all are above average group, not below, above average, and not so excellent. I have told we are not so excellent, that means 90, 95, no. We are average group except if you are excellent. So that is a positive thing. And some are very talented in the field of field games, activities like running and cricket. Very excellent. Okay. And some are very good in extracurricular activities like scout and guides. They all are excellent. We will miss you in the scout and guide and all. And you all are good in Coco. So you all are good. These are the good things which I have noticed personally in my life. 2 things which I want for your future. Catches win matches. I say catches win matches. Catch this point, win your life. If you don't catch, if you leave, you will be out. Okay, catch this. Concentrate more on your future and
and your personal development. What did I say? Concentrate more on your future and your personal development. Very essential. Your व्यक्तिगत जीवन is very important. For that we need सर्वांगीण holistic development. Second, understand the value of time. Understand the value of time. And your parents लागत कहते हैं लागत जो आपके ऊपर लगा है ना. Today all are in new dress, shining, ronak, charming, beautiful, handsome, very good. But not even one of you would have spent 1 rupee from your. आपका पसीना से मैं एक चीज को खरीदा हूं. Can you say? मैं अपने मेहनत से मैं इसी चीज को, ये चुन्नी का खरीदा हूं, या वो टॉवल को खरीदा हूं, या साड़ी को खरीदा हूं. Anybody? No, none of us. लागत कौन लगाया? Parents. Understand the value of that. Again I repeat 2 things. Concentrate more on your future and your personal development. Understand? Personal plus personality development. Personal as well as personality development. And understand the value of time and the money or the source your parents have spent upon you. And when you understand, you will achieve your goal. Understand, dear students? Okay, I just want to tell my 12th. Do you know when I was in my 12th? You may not know. May not, any one of you have born that time. I did my 12th in the year 1984-85. 41 years before. 41 years before. At that time, no one gave us send off. We were giving send off to ourselves and bye-bye to the school. And that year 84 October 31st, Indira Gandhi was shot dead. And that time we had, as she has given us this beautiful podium for our school. Like that we had given to our school the photo portrait of Indira Gandhi to our school. That time farewell was not given to us. We ourselves celebrated the farewell by the 12th standard students, and we ourselves decided what to be given to the school. Now for you farewell is given and the world changes, and therefore so you will have memories for you in your lifetime. जब आप लोग आएंगे, this school will be always open for you. We want you to come as IAS, IPS, and doctors, MBBS. Okay, NRI. You know what is NRI? Non-resident of India. Okay, like that we want you. We want you always. There is only one field in the world, only one profession in the world, where who practices that profession, wishes that who were trained under me, always above me. That is the teaching profession. Teaching profession is the only profession जो इच्छा व्यक्त करता है, जो मेरे अधीन रहे और मेरे कंधे से एक कदम ऊपर रहे, above my shoulder. So we provide that opportunity, we create that opportunity.
and you are rightly placed in your class during Teachers' Day. Education is the only profession which creates all the other professions, and therefore understand the meaning of it and understand the value of it. And dear students, I am going to conclude my speech, but what I wish I have already told. The time you have wasted will never come back. The time you have used, you have already invested. That is the foundation for you after 12. On this foundation you will build your future. Now hardly 10 days left. Hardly 10 days left. Your exam will start. मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, and I am asking you, don't waste your time. Till March 25th, till you write the last exam. Till you write the last exam, I kindly request, cut off all the other activities. Say no to mobile. Say no to friendship. Say no to all the outdoor activities. You yourself, अपने शरीर को हथकड़ी डाल दो, अपने माइंड को हथकड़ी डाल दो. You understand? And concentrate on your studies, and you will come with a marvelous result. And I promise here, if anyone come with 95%, 10,000 enough. And if anyone gets only 2 more percent, only 2 more percent, 97, I promise to give on this month 1,11,111 rupees. Okay, how much? 1,11,111 rupees. You will get on this month. I promise to you and a challenge to you. Whoever comes 95%, you all will get 10,000 rupees. But 97, you will get. Remember, a challenge and a promise. Take it and show, Father, you promised, do it, I will do it. So with this motivation, my dear students, I wish you, we want to shine, make you shine in this society and make use of your time. And whenever you come, most welcome to our school anytime. The door is always open. You are welcome. And at this time, I want to thank our 11th standard students and teachers who have prepared and presented various programs. So I will ask all the 12th standard students, please give them a big applause. To honor you. Okay. So with this, I went up. And I just want to say a prayer. Dear God, bless my students. You are their creator. You have created them with a purpose. You have brought them with the intention to study in your mission. Bless them abundantly. Open their hearts. Open their minds. Open their nerve system, open their brain system, open their blood circulation, put in them proper thoughts, put in them the way to study for the exam, cleanse their minds, remove from them all those bad thoughts
and all those bad deeds which will stand as obstacles in their growth. Give them all that they require: good health, good mind, good intention, and willingness to learn. Learn from their lives, from their experience, and from others, and from new technology, from their parents. Make them useful for the purpose you have created. Send your Holy Spirit on each one of them, that they will be touched by your loving power and your loving care, so that they will become good citizens of our motherland India, and they will be service to the whole humanity, and their parents will feel proud of them, and they will be students whom we teachers who taught them will say they are our students. Please grant this, Lord. Please bless our children, bless our teachers. Kindly be seated. Kindly be seated. And so, my dear students, with these words I want to conclude. We will miss you. God bless you. Thank you.